रहने दो, मत खोलो। नेट चल रहा है? जूम खोलो, लिखो जूम। खाला नहीं है, खाला नहीं है। खाला ना की कुड़ी बाकी जाउड़ी है। यप बेबी। हो जाएगा, टाइम लगता है। यस। जॉइन। आ गया आ गया। आवाज आ रही है? डिलीट। वेट। देखो दिस 557। रिकॉर्डिंग। 557 हो गए हैं। ओके। अपनी ऑडियो म्यूट कर दो। ऑडियो म्यूट कर दूं? हाँ, ठीक। म्यूट करके। हाँ हाँ, यहीं से ऑन करना है, ठीक है। जहाँ से म्यूट किया है। देखो मैंने म्यूट क्यों करवाया है, 558 हो गए हैं, 6 बजे बच्चे आना शुरू हो जाएंगे, तो तुम जो बोलोगी वो मुझे अभी उनको सुनाई, शायद कोई पहले ना आ जाए, ठीक है। ठीक है। अब ये बात है, अपना डिजिटाइजर लगा दिया। और वो सिलेबस डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रख लो। नहीं है तो मैं कर लूँ यहाँ से। फिर से भाई तो बोलो ना। मिल गया। अच्छा, वन मोर थिंग। बच्चों का स्पीकर ऑन ही रहने दें। बच्चों के स्पीकर ऑन रहने दें। अच्छा ठीक है। बीच बीच में चैट बॉक्स देखते रहना। ये टूटू किसका हो रहा है? नहीं नहीं, बच्चे आना शुरू हो गए हैं। मैं अलो कर रहा हूँ, यू कैन नॉट डू दैट।
Hi students. Can you people hear me? Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay, okay, great. Okay, wonderful. So today we have English class, right? Hello. Yes, sir. Yep. Yes, sir. Okay, great. Wait for a sec. I think the other people who cannot speak, I need to. Okay. Great. So, um, the most important thing is that the teacher that we have today is a wonderful teacher, and I'm sure that you people are going to learn a lot. Her name is Mridhu Sharma. She is a PhD. She is net in economics. Okay. And I hope आप सब जो तैयारी कर रहे हैं, she'll able to do justice with your preparation and आपकी preparation अच्छी तरह से हो. जो भी क्वेश्चन है मैम से पूछिएगा, बिकॉज मैंने मैम को तैयार जब रिक्वेस्ट की कि वो आए इस कोर्स के लिए, तो शी वाज सेइंग कि सिलेबस बड़ा छोटा सा है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, शी इज नेट इन इंग्लिश, PhD, pursuing PhD in English. Her name is Mridhu Sharma. So consider her not as a teacher, but as your, I mean, guide, as your friend. Okay, make the best out of it. Okay. तो Okay, sir. हम थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे कि बाकी बच्चे अगर और कोई ज्वाइन करना चाहता है, ठीक है, तब तक मैं मृदु मैम को होस्ट बना के वहाँ शील टेक ओवर. Okay. बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. Thank you, sir. Thank you, Sahil sir. Am I audible to everyone? Yes, sir. Okay. If there is any query, anything that you want me to know, you can write in the chat box. I'll be discussing the topics of English with you. We'll wait 4 minutes for all the students to join, and then we shall begin. Okay, ma'am.
I think most of the students have joined now. So we shall begin. Shall I begin? Yes, ma'am. Okay, great. Can you see the syllabus? Yes, ma'am. So for general English, there are only 10 marks. तो आप लोग काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि 10 marks हैं तो we don't need to bother. But मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि these 10 marks are very important. Even 1 mark is very important, but these 10 marks are important not because they are in your syllabus, but because ये बाकी English की तरह नहीं है. जो grammar की marking रहती है, that's always like mathematics. So if you're correct, and if you're wrong. So these are the 10 marks. If you are clear with your basics, so these 10 marks are with you, so that you are good to go for your exam. Right? और हमारे पास काफी बेसिक से टॉपिक्स हैं इंग्लिश में जो मैं सिलेबस देख रही थी. काफी इसमें से जो टॉपिक्स हैं आई एम श्योर वो सबको आते भी होंगे और काफी मतलब स्कूल लेवल के कॉलेज लेवल के आप मल्टीपल टाइम्स उनको पढ़ते हो, बट वी जस्ट नीड टू ब्रश अप आवर बेसिक्स. राइट? करके Yes, भी ma'am. रखे होंगे. जैसे टेंसेस हैं तो आई थिंक टेंसेस हम लोग स्टार्ट करते हैं. अगर हम देखें कि टेंसेस हम कब स्टार्ट करते हैं तो टेंसेस 4th 5th क्लास से लोग स्टार्ट कर लेते हैं पढ़ना और हमें पढ़ाया भी जाता है. राइट? Yes, ma'am. तो इसमें हमें ज्यादा बॉदर करने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि जो भी हम करें हम अच्छे से करें. So we have tenses, we have jumbled sentences. कुछ portions ऐसे हैं that I can teach, but some portions are such कि आप लोग खुद ही कर लेंगे. जैसे sentences rearrange करना, जैसे synonyms, antonyms, ठीक है, जैसे idioms and phrases. वो आप लोगों की ऐसा नहीं है कि हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, या pair of words and the useful meaning. ये हमारे पास टॉपिक हैं. ये ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो फ्रेजेस हो गए, ये चीजें आपको पता भी होंगी, बट स्टिल आई गिव यू द बेसिक्स और ये प्रैक्टिस से ही आएंगे. अब अगर आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस तो आप क्या करेंगे, वो आप खुद कर सकते हैं. ठीक है, प्रोवाइडेड यू नो टेंसेस, यू नो नरेशन, यू नो अदर थिंग्स. राइट? सो आज हम लोग लेट्स बिगिन फ्रॉम द इजीएस्ट. दो काफी इजी सिलेबस वैसे ही है आपका, बट वील बिगिन फ्रॉम आर्टिकल्स. कहाँ से शुरू करेंगे हम? आर्टिकल्स से हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, आज हम लोग आर्टिकल्स शुरू कर लेते हैं. देन लेट्स सी हाउ यू पिक अप पेस और कैसे हम लोग बाकी सब चीजें जो हैं वो करेंगे. राइट? सो आई वांट ऑल ऑफ यू, आर यू लिसनिंग टू मी? I want to have an interactive session. So when I ask, I want you to unmute yourself and answer me one by one, not creating a chaos, but let you also answer. Because basics are सब है यहाँ पर, तो कोई issue जो है मुझे नहीं लगता कि रहना चाहिए. ठीक है? So syllabus आप लोगों ने देख लिया. We have tenses, narration, models, articles, jumbled sentences हैं, which I've already told you. There's no need to teach that rather, because if you know the rest of it, तो आप वो कर लोगे. Phrases, pronouns, homonyms, homophones, clauses, synonyms and antonyms, pair of words और उनको useful sentences में जो वो करना है, meaningful sentences में, idioms and phrases, uses of prepositions, active and passive voice. Right? So we'll begin with the basic and then move on to the complex things. Though इतना complex कुछ नहीं है इसमें. So without much ado, हम लोग क्या करते हैं? We shall begin. Acha, is everyone's mic on? When I'll be asking, I want people to answer, right? Yes, ma'am. Okay. So what are
What are articles? What do you understand by articles? Anyone? Article You is can a write in the kind of chat box if you don't want to speak. Yeah, sorry. article is a kind of adjective. It is used before a noun to make it definite or indefinite. Article is not a kind of adjective. Not exactly. Adjective तो नहीं होता, but हाँ, it is used It is before a a kind noun. of adjective. Yes. Okay. Anyone else? How many articles do we Articles have? are limiting words. Num tree, a, and the. Right. A and the. ठीक है. So we have, right. Three kinds of articles, very right. A, and the, that we're going to study now. We have A, sorry, not working right. Just a second. Right, we have A, and the. A and an are indefinite articles. A and an are indefinite articles. Right? Just a sec. I'm so sorry to interrupt. I think ma'am is finding problem in using this interface. Is that so, ma'am? Yes, ma'am. Yes, it's a little bit problematic. Okay. So to all the students, kindly bear with ma'am, so that because ma'am is finding trouble in using this interface today. It is for the first time I think ma'am is using. So, ma'am, can I help you somewhere? No, it's okay. I'll see. Thank you. Okay, that's great. Is it okay if I just speak and you people listen? If I'm fast, you can tell me, right? Okay. If I'm speaking fast or if I need to repeat something, you can tell me. You can write in the chat box. You can speak. I'm very open to it. Or rather, all of you, जिसको भी कुछ भी कहना है, कुछ भी doubt है, you can unmute yourself, raise your hand, and ask whatever you want to ask. Right? Okay, ma'am. A and an are indefinite articles. A and an are indefinite articles, and the is the definite article. Right? A जो है वो हम use करते हैं in the beginning of a consonant. You understand what are consonants and vowels? Yes, ma'am. Can anyone tell me and the class what are consonants and what are vowels? Somebody said yes. Okay. Am I not audible? Vishali is writing, you're not audible. You're audible, ma'am. Okay. Okay. A and an. Okay. A is you consonants are we have 5 vowels A, E, I, O, U, and then the rest of the alphabet. जो 26 हमारे alphabet के letters हैं, they are consonants. So A is used before a consonant.
obviously articles are used before nouns, but before a consonant, जहाँ पर हमारे पास consonant रहेगा, like a man, a hat, a university, a college, a school. Okay? Hello. 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 जी, चाली बोले. Hello everyone. Please you can listen to me. Please type a yes if I'm audible. Buffering हो रहा है. Okay. There's some problem with my connection only. Is it okay now? I moved to a better spot. Is that okay now? No, ma'am, voice is not clear. Voice is not clear. Is it breaking? Ma'am, you are not audible. Okay, okay. Let me fix it. Give me a few moments. Okay, ma'am. Am I now? No, ma'am. Not audible. I think there seems to be some problem. Yes, sir. Connection. Yep. There is some problem in the connection. So let's take a break of 5 minutes and let us connect again. Okay. All of you who are here only, stay here only. I'll check the interface of the ma'am. What is the problem? Okay. No. Let's take 5 minutes break. I'll just see what is the problem. Okay, sir. Okay.
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you Okay, I'm sorry for the interruption with my network. Okay. We have 3 kinds of articles, right? Sorry, I'm using this for the first time and so let's see. Okay. We're talking about second indefinite article, right? We have a, we have and, we have the. A is used consonants. As I was telling you, consonants matter apart from the vowels. Ma'am, it is still breaking. Not clear. Okay. Okay. And now, Ma'am, you are not audible. okay. Let me try something else. Hello, Yes. ma'am. Sir? I think the voice is buffering. Okay. Is that with all of you? Yes, sir. Yes, that is the problem. Can we do one thing? Let's leave this meeting and try to reconnect once again. I think we can try this thing because I don't know what is the problem. Everything seems to be very fine, and there seems to be some problem with the internet connection, I think. Let's try this thing once again. All of you try to join on the same link, okay? Once Okay, again. So I'm just canceling this particular link. Got it? Okay, sir. We can try this thing, and if this does not help, then we'll try something else.